Wait on. Rajapaksa has to say something to Ferguson. What a fearless batting. Brilliant hits. Two brilliant hits from Rajapaksa and just gone very fine. He's very talented batter. I like him the way he just bats. Two consecutive boundaries and now takes a single towards third man. What a fine batting from Rajapaksa. That I was just thinking of a lowest power play total. Suddenly just two boundaries changes run rate of Sri Lankan side. In early 4 overs, they were just meant to score 8 runs and gave away 4 wickets. Now, couple of boundaries for Bhanuka Rajapaksa and he is playing very good. Oh, very close to the leg stump. Jamaica shuffling toward off stump, though it was given wide by the umpire, but very close to the leg stump of Jamaica. Ferguson gave away 12 runs in his first over, 1 ball to go, and a totally change in display like what Saudi and Ball did in the first 4 overs. Ferguson to Jamaica, fuller delivery, a dot one, yes, over completed, 5 overs complete. It's 18 for loss of 4 wickets, and well, both are very good. I always like to see new ball bowlers like Saudi and Bold. They really bowl well, or the way they utilize the new ball, awesome. They takes early wickets and gave nothing away. 8 runs in their 4 overs. Completely changed the game for Sri Lanka. Now Sri Lanka in all sorts of trouble. और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पुअर गेम अवेयरनेस की वजह से श्रीलंका आज मैच से टोटली आउट हो चुका है. दो के राजपाक्सा में भी कुछ खड़ा हो जाए, थोड़ा सा एंटरटेन करे, बट कैप्टन ने असेस नहीं किया सिचुएशन को. मेरे ख्याल में यही बेहतर वर्ड्स होंगे. और अपने जो बॉलर्स हैं उनका यूटिलाइज अच्छा नहीं किया, साथ साथ फील्डिंग ने भी साथ नहीं दिया. बोल्ट अपना तीसरा ओवर करेंगे और बोल्ट विल कंटिन्यू करेंगे. मेरे ख्याल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बोल्ट को वो ऐसे ही अपने ओवर कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि विलियमसन को पता है कि अगर एक टाइम पे बॉलर अच्छे ओवर करा रहा होता है तो वो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता और वो अपना जो एग्रेशन है वो कीप करता है और प्रेशर क्रिएट करना जो कंटिन्यू करता है. और प्रेशर जो है वो कंटिन्यू करेंगे. श्रीलंका में बोल्ड करेंगे दूसरा बॉल टू रजपाक्सा, जिन्होंने थर्ड मैन की जानिब खेला है. और लेट्स सी, ज़्यादा तेज रनिंग करने के लिए नहीं जाना जाता है रजपाक्सा को, और 1 रन ही बना पाएंगे. और 1 रन ही बन पाएगा. और 19 रन बन चुके हैं. रजपाक्सा पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करती है और मेरा नहीं ख्याल के टोटल कर पाएंगे रजपाक्सा. अच्छी शॉट जमैका की, और ले लो, आप ले लो दोहान. अच्छी कवर ड्राइव थी एंड इट जस्ट गोज स्ट्रेट टुवर्ड्स द फील्डर. और इतना आसान नहीं है. अब स्टिल इवन द बॉल इज अ बिट ओल्डर वन नाउ और थोड़ी सी बीटिंग मिल चुकी है. और जमैका को भेजा है, सेंट इन किया है टू गेट फ्यू बाउंड्रीज. और लेट्स सी कि क्या बनता है. बॉल करेंगे, अच्छा स्लो वन किया और पॉइंट की जाने के लिए डॉट बॉल होगी वंस अगेन. इतना इजी नहीं होता बोल्ट और सोदी को हिट करना, डेफिनेटली विद स्पेशली विद अ हार्डर बॉल. तो 130 की पेस से बॉल करते हैं एंड देन सडनली 118 की पेस से बॉल फेंक देते हैं, तो वो टोटली चेंज कर देते हैं एकदम से बॉल का एंगल. 5.4 overs, 21 runs for 4 wickets. एंड इस बार शॉर्ट बॉल की, लेकिन
मेरे ख्याल में चमेका गुरुरत्रा ने इस बार हिट तो की है, लेकिन बाउंड्री इतनी लंबी है, स्टिल 4 रन नहीं हुए। और सऊदी जो थे वो इतना तेज नहीं जाना चाह रहे थे। मेरे ख्याल में इतना कोई थोड़ा सा कोई मसला है सऊदी का, और नॉट फीलिंग वेल। और 3 रन बनाए एटलीस्ट, और 5.5 ओवर, एक आधी विकेट और लेना चाहेंगे। विलियमसन, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि विलियमसन होल्ड नहीं करेगा बोल्ड से, या तो पूरे ओवर करवा रहे। 3 ओवर तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था एटलीस्ट, और वही चीज इन्होंने किया। और क्योंकि व्हाट अ स्टॉप, गुड एफर्ट। बनू का राज पाकिस्तान ने मिड ऑफ की जानिब खेला, हाथ से रोका, और एक रन जो बन सकता था वो भी नहीं बनने दिया। और 6 ओवर के इख्तिताम पर 22 ओवर्स, 22 रन, और जस्ट 22 रन। यही मैं कहूंगा कि इट इज जस्ट 22 रन, बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि दोनों टीम्स ने अर्ली ऑन तो स्ट्रगल किया ही किया, बट द वे न्यूजीलैंडर्स जैसे कंट्रोल किया गेम को, वो बहुत खूबसूरत है। और 6 ओवर्स के इख्तिताम पर श्रीलंका 24 और न्यूजीलैंड 25, तो सिचुएशन इवन आउट ही है। और यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि सिचुएशन डेफिनेटली मुश्किल बना देगा। विलियमसन इतना आसान नहीं होगा इनके लिए रन करना, और दैट्स व्हाट ही हैज डन फॉर। ओ गोना, जमैका ने हिट करने की कोशिश की सैनेटनर को, और सैनेटनर ने विकेट हासिल कर ली है पहली बॉल पे। ही नोज दैट के ही विल गोइंग टू हिट इट सीधा मिड विकेट के फील्डर, और सऊदी और बोल्ट वहां मौजूद थे। और मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि ये ज्यादा चांसेस नहीं देंगे। हाफ टीम पवेलियन वापस लौट चुकी है, और जस्ट आफ्टर 6.1 ओवर्स। तो आप ये देखें कि कितना डिफरेंट अप्रोच के साथ लेके चल रहे हैं केन विलियमसन। और फील्डर्स, ओवरऑल फील्डिंग जो है वो कैप्टन के साथ रिलेट करती है, और अगर तो फील्डिंग साथ दे रही है तो रिजल्ट्स यही हैं कि 6.1 ओवर, 5 आउट, एंड जमैका गोज फॉर 3। एंड कुछ ज्यादा खातिर खा नहीं कर सके जमैका, और जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद भी अधूरा रहेगा। बिकॉज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर आप कहें कि एक स्लॉगर वो चले तो बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करने वाला, डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से खेलने वाला ज्यादा कामयाब रहता है। सैनेटनर ने पहली बॉल पे विकेट थाम ली है, और मजीद मुश्किलात अब तो दासुन शनाका खुद ही आएंगे मेरे ख्याल में। इसके अलावा कोई भी मौका नहीं है किसी और को भेजने का, क्योंकि हसरंगा एक रह गई हैं नीचे आने वाले जो बैटर हैं जो कि बैटिंग कर लेते हैं। उसके अलावा और कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है जो बैटिंग एबिलिटी रखते हैं। एंड दासुन इज आउट, और लेट्स सी के दासुन क्या करते हैं। शनाका, भनुका राजपाक साहब 12 पे मौजूद हैं, और दासुन शनाका फेस करेंगे पहली बॉल। मिचेल सेंटर की स्लिप भी डेफिनेटली आ गई है, प्रेशर क्रिएट करेंगे केन विलियमसन। फुलर, ओ स्लिप में से गई बॉल, और लकी रहे बॉल पे बल्ला फेंका था, थ्रो किया था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से निकली और मौका नहीं था। सऊदी बहुत अच्छे स्लिप फील्डर हैं, और 4 रन होंगे। लकी स्केप, और ये होती है कंडीशन के मुताबिक, फील्ड के मुताबिक बॉल करना। दो थोड़ी अवे भी थी सऊदी से, लेकिन सेम बॉल की, और एज जो थी निकलवाने का मकसद वही एज निकलवाई। और अगेन स्लिप पे फील्डर मौजूद है। इस बार थोड़ी सी खींच के बॉल की, और विकेट टू विकेट बॉल की, और डॉट बॉल होगी। दोनों बैकबोन कहलाए जाते हैं श्रीलंका की, बट
ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 5 पहले कुछ भी ना करें और यही सारा स्कोर करें, इट्स नॉट पॉसिबल। अगेन डॉट बॉल होगी, बड़ा कॉशियस खेले और सेनेटनर फुल एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे और लूप करा रहे हैं, फ्लाइट डिलीवरी करा रहे हैं और पूरी ही इज गिविंग इनविटेशन टू गो फॉर इट और स्वीप करेंगे शनाका फॉर 1 रन और एक बॉल भी जाया नहीं की, स्लिप को हटाया और ऑफ साइड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। ऑफ द मार्क हो गए, श्रीलंका तो पहले ही हो गए थे, लेकिन पहला सिंगल भी अपनी इनिंग का ले लिया है और इट्स 29 for 5 लास्ट बॉल रहती है, 7 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से हराना बहुत मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड बहुत टफ टीम है, अगर आप उनको 170 स्कोर करने दे दी हैं तो वेरी टफ के 170 ये चेज करने दे अपने गेम, बिकॉज देयर फील्डिंग इज वेरी गुड। सेनेटनर बॉल करेंगे टू पाक्सा, गाइड किया, शॉर्ट लगे, फील्डर ने बॉल थामी लेकिन 1 रन का इजाफा होगा। इट्स 30 आफ्टर एंड ऑफ 7 ओवर्स और 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। ये जो है सबसे बड़ी बात है कि 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। दे हैव लॉस्ट 5 विकेट्स और please chip in to our live score update and discussion and share your feedback. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, don't forget to subscribe our channel. Float in your comments and analysis or the stage is set and all groups are getting tougher and tougher and we still don't have any team who you can say is qualified for semi-final. Well, New Zealand is well on their way along with India in the group 2 or otherwise still after a couple of days we'll be able to make any statement whether who will be making roads towards semi-finals. Tomorrow will be a very heavy day for group 2 and there will be 3 games and will definitely define who will be leading the group. Isodi comes in short ball and Rajpaksa hit it well over mid wicket for 6. He's kind of better who don't spare poor deliveries or you can say loose delivery. First loosener and it's a big hit for maximum from Rajpaksa. 7.1 over and it's 36. Short delivery, first delivery from leg spinner. You can expect that it may happen sometimes from a leg spinner, from a wrist spinners and deposit it into the stand. This time a fuller, but a bit towards outside of stump. Cut it and Senator just fumbles it for 1 run. It was towards his left and he just managed to put hand on it and 1 run added to Sri Lankan total. Sri Lankan coaching staff is a bit worried looking faces. You can expect that half of the team have been sent in back to the pavilion at the end of 6th, 7th over and they are in deep trouble. Ravina Box are just a run, try to go for run but he just stops and get back into the crease. Luckily that there will be no run out. This is the last in which Sri Lankans want a run out. 7.3 overs and 37 run, a dot delivery. Dasun Sri facing to Mitchell's Ish Sodi. Sweeping it towards scare leg and it will be just a 1 run. Running is big issue for Rajpaksa because he is never a good runner between a wicket. He don't like to put in lot of effort in his running because he has his fitness issues with the board as well and he believes in big hitting and hitting for sixes. What a shot, brilliant cut shot and he beats both the fielder, a deep backward fielder and a point fielder, sorry, a
backward point fielder, and a point fielder just manages a gap and 4 runs. Big over for Sri Lanka in this over, a 6 and now a 4. And Bhanuka Rajapaksa hitting the ball well and timing it with the perfection. 7.5 deliveries for 42 runs. At least Sri Lankan fans have something to cheer it in their inning. Earlier on, they have lose half of their wickets in just 7 overs. Now it's the 8th over, and Bhanuka Rajapaksa to face to Isodi played it towards Kelak region for 1 run, 8th over complete. It's 43 for the loss of 5 wickets, and it's Bhanuka Rajapaksa who's on 25 with Shanaka on 6. Very tough for Sri Lankans to make a comeback from such situation, because I don't expect that Kane Williamson will spare and will loosen up things for Sri Lankan batters. He will go for wickets and will definitely attack. And any wicket, and a single wicket, just needed one more wicket to get into the tail enders like Hasranga, and then simply they have no one to who really bats. Only Hasranga is there. He's you can say a good batting all-rounder, but you can't expect him to score big 50 or uh, big 50 or something like 60 against, especially in a center. To continue his second over, Asranga pushes it toward long on for 1 run, and he's on 26 of 16 deliveries, timing well, batting well, and let's see what he will have to show in this game against a good and formidable batting lineup and a good fielding unit. Sander to go to Dasun Shanaka. Fuller outside off stump. What a shot! Just uses his feet and hit it towards cover for 4 runs. He beats the inner circle fielder, and the fielder on sweeping the offside didn't have the chance to stop the ball because the placement was perfect, and a boundary for Dasun Shanakai. Brilliant use of feet. This time, keep the ball short, and Dasun hits it straight towards the cover, and a dot delivery, 8.3 for 48 runs for the loss of 5 wickets. Williamson changing things around and center to board to Dasun Shanaka. Short outside off stump, just pushed it towards sweeper fielder towards offside, added 1 run, and definitely run rate will be the next big thing about what Sri Lankan batter have to keep thinking on, and they don't have any wicket left as well. Thus, Rajapaksa to face Senator just timed it well towards mid wicket, and yes, good running, finally good running, and easily takes 2. The fielder tries to cut it out but don't have enough chance, and he timed it well towards mid wicket into the gap for 2 runs. Couple of runs for Bhanuka Rajapaksa, 28 for just 17 deliveries, and Dasun on 11 on 9 deliveries, playing it well and going fine at the moment. Bhanuka. Last ball of second over of center, it's a fuller one. He just guided it toward long on region for 1 run, 9 over complete for 52. And as far as runs are concerned, Sri Lankans are ahead from New Zealand side. New Zealand were 54 in their 10 overs, and I think they were something like 40 something, 44, 45 in their after completion of 9 overs. But it's their batter, Phillips, who just put a brilliant show and single-handedly takes the game away from Sri Lankans. But Sri Lankan fielders didn't do well today. They were not doing good, and they were
you can say, below par as their effort were concerned. They have dropped couple of chances, and which Phillips have fully utilized and scored second century of overall century of this ICC T20 World Cup. Ferguson to bowl his second over to Bhanuka Rajapaksa. In first over, he consumed 12 runs, and it was Bhanuka Rajapaksa who hit two boundaries to Ferguson. It will be very crucial, and it will be a very note that out. It is very crucial over. It may definitely give runs or wicket. Good ball, good delivery, targeted the stumps, just able to put bat on it. It hit it towards scale, deep scale leg fielder, and for 1 runs. Good delivery to start the over, and Ferguson don't need to panic at the moment because win or lose, we will party. That's what Sri Lankans want. That's good. That's good sportsman spirit. And Ferguson to bowl. Oh, good delivery to Dasun Shanaka. It's a short delivery, 143 kilometers per hour. Closes the face of the bat and just hits the edge of the bat, and it just pops it and fell between short cover and Ferguson. A dot delivery. It is very crucial over, and you can see, you can even feel it. Good effort. This is the effort that New Zealand will put on into the field. Timed it well towards the backward point, but point fielder Finn Allen just stops it, and just a single which could have been easy 3 for Sri Lankans. They definitely will make things tougher for Sri Lankans, and you can expect that. You can expect from New Zealanders that they are very strong in their field, and they don't give enough chances, even run out or catching opportunities. They will not miss fields. But good shot, what a shot toward extra cover. The mid-off fielder was brought into the circle, and Bhanuka Rajapaksa just hit it well over cover for 4 runs to Ferguson. He is charging Ferguson definitely. They will target some or other bowler because the run rate is keeping. They have to keep an eye on the run rate. Run rate is already 10 per over and above, and what a shot. You will definitely enjoy a cameo from Rajapaksa because he's very good sweet timer of the ball. That's outside off stump and a slower bouncer sort of delivery. Misses it, and it goes to the keeper. Dot delivery from Ferguson. The main threat for Sri Lankan batter is the New Zealand fielding, because they didn't give you too many chances what Sri Lankans have given to Glenn Phillips. So you have to be very accurate. Good shot. Let's see whether it's. Oh no, it's in the hands of Williamson, and it's the wicket. I told you it could be a crucial over, and it's Bhanuka Rajapaksa who just tries to hit it over mid off, but Williamson into the ring and just has to run couple of steps and easy catch. It looked like a very good time shot, but straight into the hands of Williamson, a big wicket. And what I have told you, you have seen a wicket, and a crucial wicket, 34 on just 22 deliveries. But now the match is definitely for the Sri Lankans to lose. Sri Lankans are 6 down, and they had already lose the all important Rajapaksa's wicket. He was going fine on 34, hitting the ball well. That's what I was talking about, that fielders of New Zealanders will not give you any chance. So you have to be very accurate and make sure that you will take very calculated risk. He takes the risk and has to pay off, and in the shape of his wicket, and Sri Lankans are now
in all sorts of trouble, and I don't think they can came back from such scenario. Earlier also they was in big trouble, but the way Rajapaksa was hitting the ball, it looked very good, and but unluckily he's gone and back into the pavilion and didn't make roads. Please subscribe to our channel and also float in your comments and share your analysis. What are your thoughts? Who will be the semi-finalists from the Group 1 and Group 2? As matches have been gone, the situation getting more crunchier, and we have a complete washout yesterday that really hurts both England and Australian cause to go to the semi-finals. Now uh, the the position is going very difficult. Sri Lankans were looking for a victory today. They had their chance, but they just failed it and just gave away to the New Zealanders. Earlier, they took early breakthroughs but didn't capitalize on those dismissal, and now on all sorts of trouble, and they almost are down and out. I don't think they have no any chance. Winning predictor will definitely have to be on 99% now. We know that Shanaka has the capacity, but it is very difficult to score 1 or 10 runs in last 10 overs, and you have left with just 4 wickets. Hasranga and Senator to start the second part of the game, and it's the Ferguson who is winning the battle at the end and takes the all important wicket after hit for 3 boundaries in couple of overs, but the wicket belongs to Ferguson, and brilliant captaincy from Kane Williamson. He keeps on exerting pressure, didn't give overs to his spinners. He just mixes it up quite well and takes the wicket. Center dot delivery, clear his front leg, but just defended it towards cover region for dot. Center to ball to Hasranga. Fuller delivery, played towards the cover, defended it well, but keeping pressure on Sri Lankans ball by ball. Fourth delivery of the over, and he tried to hit it towards mid wicket, and well, 4 runs over the short mid wicket fielder into the ring and got the all important boundary. Yes, Srinagar will definitely don't wait for too many deliveries. He will definitely attack. Just managed to hit it over short mid wicket fielder for 4 runs. Tried too well. The long on fielder covered the area and in the end misses it. Fuller delivery hit it towards backward point but straight to the fielder. Good fielding, good effort to stop that one. Another dot. It's Finn Allen who is doing very good job standing into the point position. Already taken a catch. Oh, good delivery. Edges it towards backward point for dot delivery. 5 runs in this 11th over, and it's 63 for 6, and Shanaka on 13 and Hatsranga on 4 on 5 deliveries, and Senator has already bowled, I think, 3 overs. Ferguson 2, bowled 3, Saudi 2, and Saudi 1. He will bring Saudi back to give some confidence to his bowler, or you may see, oh, very close. Dasun Shanaka tries to hit him sweep, but almost dragging the ball into the stumps. Lucky to survive. The ball hits his gloves and just misses the leg stump. Keeper
did it well to stop the ball and a dot delivery to start your good delivery. Again, good delivery. The fuller one, but not fuller enough. Just defended it towards cover for dot delivery. Dasun Shanaka on 13 of 14 deliveries. Pressure is creeping up. Scale like mid wicket, long off, long on, and a deep sweeper fielder in place in offside. Uses his feet, trying to go big, but just manages to hit towards mid wicket. A thickish edge and a 1 run. Good bowling from Ish Sodhi, using the pressure created by the other bowlers. Gave flight, but manages a edge and a run. Srilanka to face Ish Sodhi will be bowling fourth delivery of his over. Outside of stump and straight into the hands of Kane Williamson. What a catch! Simple, brilliant captaincy, brilliant bowling. That's good. That's what I told you, that they will go hard on you and will not give you opportunity to make a comeback in this game. New Zealanders are very tough side to beat, and they were down and out while they were batting in the first 6 overs, but make very good comeback into the game and completely outlast the Sri Lankans, I think now. Bowlers into the bowlers, and 7 wickets gone after 11.4 overs. A lone warrior Shanaka is there into the crease, but it's very tough. It's getting tougher for Sri Lankans even to score 100 or 120. After completion of this game, run rate will be sky higher for New Zealanders, and very important win, a very important draw against Afghanistan, which could be a very difficult game, which could be a very difficult. I am persisting on it that New Zealand could face difficulties if the match goes on, but very crucial 1 point against Afghanistan, now knocking Sri Lankans out in today's game. Mahesh Theeksana comes in and he is not a Sangha type batter, you can say. He is a proper tail-ender. Dot delivery to start. Once again beats the bat and over completed. 12th over complete, 64 for 7, and all bowlers are having their good day out. Now 1 wicket for Saudi, 1 wicket for Senator, 1 for Ferguson, 1 for Saudi, and 3 for Bold. That's what you expect in such games to boost your bowlers. Like Saudi goes for runs in early of his over, and in against Australia even he was bit on the higher side, but utilizing him now and giving bit of confidence will do blessings in the upcoming games of World Cup. Center to bowl last overs of his spell quota, and he just consumed 20 runs and 1 wicket in 3 overs. Outside off stump, straight to the point. Good fielding from Nisham, good fielding. That's what all you need, a full support from your fielding, and that's not easy. That's hit quite well, and Nisham did it well to keep it to a dot delivery. Use his feet, and it will be a wicket. Very rare that New Zealand. Oh, Senator couldn't reach that time and misses the catch. The bowler had an opportunity to take catch and takes wicket for himself, but he misses it. He has to run itself. Why I don't know why keeper didn't go for it, because the ball goes well into the air and he skied it up, and just 1 run in the end. Mahesh Theeksana just edges it to the first slip. Brilliant ball from Senatner, just
giving it air and bowling it straighter to the batter and just manages to hit it to the first slip. That's very good captaincy, a duck for Mahej Theekshana, and very good captaincy, knowing that they can take wicket. Brilliant captaincy from Kane Williamson, and all 8 wickets gone. Here is the comparison between captaincy of Dasun Shananka and what Kane Williamson is doing right now. He's just exerting more and more pressure and looking for wickets to keep the run rate sky high, and it's very important in the pool stage to keep the run rate high when weather is stakeholder. Currently you can say that you may face a wash out, but all it matters that you in which game you have keep the run rate high. You can try your level best, and that's what Kane Williamson is doing at the moment. And हालात यही हैं और न्यूजीलैंड कंप्लीट चार्ज कर रहा है, एंड मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कमाल की कैप्टनसी है और रजिथा आए हैं और बैट करेंगे और डॉट डिलीवरी हुई है और आखिरी बॉल थी, रन नहीं लिया बिकॉज के ही डोंट वांट टू गिव फेस टू रजिथा फॉर द होल ओवर. रन नहीं लिया, 2 डॉट बॉल हुई हैं एंड रजिथा लीव द बॉल एंड एंड ऑफ स्पेल 4 overs 2 wickets for 21 runs. एंड इस ओवर में जस्ट 1 रन बना है और 1 विकेट लिया. सैनिटनर 2 विकेट्स ले चुके हैं अपने स्पेल में और कमाल की बॉलिंग की. सैनिटनर ने आते साथ चमिका को आउट किया था पहली बॉल पे और आखिरी ओवर यानी कि चौथे ओवर में भी 1 विकेट ली, तो 2 विकेट्स ली हैं इस ओवर में. 1 रन दिया है और कंप्लीट नॉकआउट किया श्रीलंका को आज आफ्टर इन 40 ओवर. अगर मैं बात करूं कि 33 ओवर्स का मैच अभी तक हो चुका है और इसमें सिर्फ पहले 6 ओवर में श्रीलंकन्स ने लीड किया है और आफ्टर अर्ली 6 ओवर न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो कमबैक किया और बेहतरीन कमबैक किया. फर्गुसन अच्छी कैप्टनसी वंस अगेन. मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूंगा मिस फील्ड सोडी की जानिब से और व्हाट रियली हैज हैपेंड. ये ऐसी मिस फील्ड है, रेयर मिस फील्ड जो कि अक्सर हमें सोडी की जानिब से देखने को मिलती है और 4 रन हो गए. पॉइंट की जानिब गाइड किया था बॉल को और सीधा फील्डर के पास थी, कोई इतना ज्यादा अवे नहीं थी, बट ही जस्ट मिसेस इट, टेक्स हिज आई ऑफ द बॉल एंड इट्स अ रेयर मिस फील्ड फ्रॉम न्यूजीलैंडर्स और 4 रन बनेंगे. एंड इस टाइम पे केन विलियमसन को पता था कि दासुन शनाका हिट करने की कोशिश करेगा स्पिनर को, उसने सोडी को ओवर नहीं दिया और फर्गुसन को लेके आए, पेस लेके आए और फर्गुसन ने लेग साइड पे बॉल की व्हिप किया, सीधा लॉन्ग लेग की जानिब गई और 1 रन का इजाफा ही होगा. और 70 रन और 20 पे शनाका. राजपाक्सा की विकेट को अगर देखा जाए तो राजपाक्सा को 1-1 इंच अपनी लेंथ को इंप्रूव करते रहे फर्गुसन और फाइनली एक गुड लेंथ बॉल से बॉल की और विकेट हासिल की. रजिथा ने लेग साइड व्हिप किया टुवर्ड मिड विकेट और 2 रन हासिल कर लिए हैं और अपना अकाउंट ओपन कर लिया है. और श्रीलंकन्स आर रियली स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट और स्टिल 96 रन्स चाहिए श्रीलंकन्स को और इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल और जस्ट 2 विकेट्स रहती हैं और फिलिप्स थोड़ा क्रैम्प कर रहे हैं, क्रैम्प्स कर रहे हैं क्योंकि सेंचुरी उन्होंने की है उसके बाद उनकी जो काव्स हैं मसल्स इतने फिट नहीं है. ही इज इन द फील्ड एज पर रूल्स, उनको कुछ ओवर फील्ड करनी है अपार्ट फ्रॉम इफ इवन उनको कोई इंजरी होती है, बिकॉज आज वो स्ट्रगल कर रहे थे जब वो 60 पे खड़े थे लेकिन ही कैरिड ऑन और सेंचुरी स्कोर की और ड्यू टू हिज नाउ इंजरी काव्स पे थोड़ा सा इशू है, इस वजह से बैक
सब्स्टिट्यूट फील्डर आए हैं, गुड बाउंसर, बहुत अच्छा बाउंसर बॉल किया, मे बी अंपायर वाइड दे, लेकिन जो डायरेक्शन थी वो अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ज्यादा थी, इसलिए मेरे ख्याल में वाइड होगी ये। और 73 रन्स, 8 खिलाड़ी आउट हैं और रजीथा बॉलर को इतना ज्यादा मेरा नहीं ख्याल इनको जरूरत है न्यूजीलैंड को इतना ज्यादा स्ट्रेस करने की। अब न्यूजीलैंड को 2 मैचेस हैं, पहली और 4 नवंबर को इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ। एक गेम जीतना लाजमी है न्यूजीलैंड का, एटलीस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल की सीधा पॉइंट की जानिब खेले रजीथा, और डॉट बॉल होगी। और न्यूजीलैंड को इंश्योर करना है एटलीस्ट एक मैच और जीते तो उनके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे, और उनके जो ग्रुप की पोजीशन है वो कुछ ऐसी है कि वॉश आउट ज्यादा मैचेस हो चुके हैं, और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स कुछ इतने नहीं हैं जो कि 7 को क्रॉस कर पाए। तो इन गुड पोजीशन, और लेट्स सी कि क्या बनता है। अच्छी बॉल, फुलर बॉल कवर्स के पास गई, सीधा डॉट बॉल होगी, और 13.5 ओवर्स हो चुके हैं एंड इट्स 73 फॉर 8। और फिलिप्स जो हैं वो क्रैम्प्स की वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन दो ही ट्राइड टू गेट इनटू द फील्ड, बट जो काव्स मसल्स हैं उनके डेफिनेटली वो पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। गुड शॉट डिलीवरी और गुड बाउंसर था, मुंह फेर लिया था और लकीली उनको हिट नहीं किया और ग्लव्स आगे आ गए थे। एट द एंड ऑफ 14 ओवर इट्स 73। ये वो पोजीशन था 14 ओवर जब 12 ओवर में 70 स्कोर था न्यूजीलैंड का, और इन 2 ओवर्स में फिलिप्स ने 24 रन हासिल किए थे। 14 ओवर बहुत एक्सपेंसिव था और 3 बाउंड्रीज आई थी इस ओवर में, और गेम एकदम से श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था इस टाइम इन ओवर्स के बाद, जो कि क्योंकि 14 ओवर्स में 93 हो गया था और 14.3 ओवर्स में वो सेंचुरी कर गए थे, 100 कर गए थे। तो वो एक ऐसी पोजीशन थी जब न्यूजीलैंड वेल ऑन टारगेट टू गो फॉर 160 एंड दे इवन गो प्लस 160। तो आज का मैच लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, स्पेशली फॉर श्रीलंका एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान यही चीज करता है अच्छा। एक आप देखेंगे कि एशिया कप के फाइनल में भी यही चीज सिचुएशन थी, पाकिस्तान ने पहली 4 से 5 विकेट्स अर्ली ऑन ले ली थी एंड जस्ट गेव अवे द गेम। और नाउ सेम अभी इस मैच में भी यही हुआ है, और श्रीलंका ने 3 से 4 विकेट्स ले ली और उसके बाद गेम कंप्लीटली न्यूजीलैंड के हाथ में दे दी। सऊदी अपना तीसरे ओवर का आगाज करेंगे और तीसरा ओवर है सऊदी का, और डेफिनेटली चाहेंगे कि जितनी जल्दी रैप अप कर सकें। और 14.1 रन एंड 74 रन बन चुके हैं एंड अभी तक के 2 अपसेट्स इस वर्ल्ड कप के, एक जिम्बाब्वे और एक आयरलैंड जो कर चुका है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तानी फैंस आर रियली डिसअपॉइंटेड बाय द वे दे लॉस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। डॉट बॉल होगी रजीता को सऊदी ने की बॉल, और 2.2 ओवर्स में जस्ट सऊदी ने अभी तक 2 रन्स कंसीड किए हैं। डॉट बॉल की बैक ऑफ लेंथ बॉल थी और सीधा डिफेंडेड बैक टुवर्ड्स मिड ऑन। और विलियमसन ऐसे कैप्टन है कि आप सोच सकते हैं कि ही विल नॉट गिव ऑप्शंस टू द टेल एंडर्स। वो भी क्लीन करना चाहेंगे, विकेट्स लेना चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल की और स्वीपर के पास जाएगी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और सॉरी जो ऑफसाइड पे स्वीपर है डीप पॉइंट की जानिब, और 1 रन ही बन पाएगा। 75 रन दासुन शनाका फेस करेंगे और विल डेफिनेटली ट्राई करेंगे किसी बड़ी हिट की जानिब, क्योंकि 21 रन बनाए हैं अभी तक दासुन शनाका ने 20 बॉल्स में। और मसले मसाइल यही है कि श्रीलंका अच्छा स्टार्ट और उसको फुली कैपिटलाइज और यूटिलाइज नहीं कर सका, एंड दे हैव वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी टू गेट पॉइंट्स अगेंस्ट श्रीलंका। स्लो वन थी, बहुत अच्छी शॉट और इनटू द स्टैंड्स। ये है हिटिंग कैपेसिटी शनाका की, बट नहीं आज श्रीलंका को फेवर कर पाएगी। लेट्स सी कि किस हद तक जा पाते हैं। अच्छी शॉट, अच्छा पिकअप, स्लोर कराने की कोशिश की सऊदी ने, बट
जबरदस्त पिकअप किया और 84 मीटर हिट मिड विकेट की जानिब लगाई, जो कि बहुत बड़ी हिट है, और इजीली क्रॉस किया बाउंड्री को। इंपॉर्टेंट सिक्स, सऊदी टू बॉल, शनाका गुड डिलीवरी, और थोड़ा सा बीट किया शनाका को बिकॉज उनके हाथ की पोजीशन जो है उन्होंने वो चेंज किया, और बैटर समझा कि स्लो वन आएगी, बट ही गोज विद द पेसी डिलीवरी और 132 की पेस से बॉल किया, स्किड हुई। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का ऑल इंपॉर्टेंट मैच है कल, और पाकिस्तान येट टू ऑफ द मार्क ऑन द बोर्ड, और अभी तक कोई पॉइंट नहीं है, 2 मैचेस हार चुका है पाकिस्तान, और पहला मैच बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश जिम्बाब्वे का, और दूसरा मैच पाकिस्तान नीदरलैंड, थर्ड मैच जबरदस्त मैच, एंड इट विल डेफिनेटली क्लियर मोर थिंग्स फॉर द ग्रुप 2। आखिरी बॉल पे लॉन्ग लेग की तरफ गाइड किया दासुन शनाका ने, 1 रन का इजाफा होगा, और सऊदी का ओवर कंप्लीट हुआ। दासुन शनाका ऑन 28, एंड सऊदी ने अपना तीसरा ओवर कंप्लीट किया। इस ओवर में फाइनली एक बाउंड्री कंसीड की है, पहले 2 ओवर्स में जस्ट 1 रन कंसीड किया था सऊदी ने, और आइडियल स्टार्ट था न्यूजीलैंड के लिए। 15 ओवर हो चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल के चांस है श्रीलंका के पास, बट इस टाइम पे दे विल बी मोर डूइंग स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर रन रेट, अदरवाइज दे विल बी फार बिहाइंड। शनाका ने हिट करने की कोशिश की, मिड ऑफ के फील्डर को बीट करने की कोशिश की, बट डिडंट एबल टू। फर्गूसन आएंगे, आखिरी बॉल करेंगे अपने स्पेल का, एंड विलियमसन अभी छोटी को नहीं ला रहे, और ये एक स्ट्रेटजी है, इवन दो ही नोज दैट के एक ओवर दिया जा सकता है इस ओडी को, एक आधा छक्का में भी पड़े, लेकिन क्या पता विकेट आ जाए, बट वो एक एक रन की इतनी इंपॉर्टेंट है उसके दिमाग में, वो एक विकेट लेना चाहता है। इधर दासुन शनाका आउट हो जाएगा तो साथ ही अगर देना पड़ा तो उसे ओवर दे देगा। फर्गूसन रूम बना रहे थे, लेग साइड पे गए और टारगेट किया टांगों को, और विप किया स्केला की जाने 2 रन बनेंगे। अच्छी टाइम शॉट थी फ्रॉम दासुन शनाका, और 84 रन बन चुके हैं, और 30 रन की इनिंग दासुन शनाका ने। टू मैनी बॉल्स आज कंज्यूम की उसने, 25 बॉल्स में 30 रन बनाए हैं, और इट्स नॉट एन इजी फॉर दासुन व्हेन अदर एंड पे आप देखें कि विकेट्स कंटिन्यूअसली गिर रही होती है, तो मुश्किल हो जाता है आपको मैनेज करना। फर्गूसन बॉल करेंगे टू दासुन शनाका, बीट किया आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया फ्रॉम 145 प्लस टू सडनली 130 में आ जाए, तो 125 30 में आ जाए तो वो डेफिनेटली बैटर को सरप्राइज करती है। आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंज इन पेस किया, और डॉट डिलीवरी। न्यूजीलैंड अपनी पोजीशन फर्म करेगी आज की विक्ट्री के बाद, और इस बार दोबारा से लेग साइड पे थोड़ी सी बॉल की थी, इस बार बाउंड्री हो सकती है, एंड यस इट्स 4 शॉट लेग के फील्डर के ऊपर से खेल दिया दासुन शनाका ने, और 4 रन हासिल करेंगे। ये बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए कि बहुत बड़े मार्जिन से मैच ना हारें, और एटलीस्ट क्लोजिंग करें जो गैप है, और दासुन शनाका डैमेज कर रहे हैं इन दी एंड, और थोड़ा डैमेज रिपेयर का वर्क कर रहे हैं फॉर श्रीलंका, एंड डैमेजिंग थिंग्स फॉर न्यूजीलैंड। 18.67 का रन रेट ऑलरेडी जी बहुत ज्यादा है। इस बार विप किया स्केला की जानिब, अच्छी टाइम शॉट थी, लेग साइड पे यॉर्क किया था, 1 रन का ही इजाफा होगा, एंड इट्स 89 at the end of 15.5 overs, और लास्ट बॉल है 16वें ओवर की, और न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में वेल प्लेस्ड ऑन द टॉप है, और 3 मैच के बाद 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, और एक आधा मैच और जीता तो आसानी से दे कैन मेक ए नोट्स। वाइड डिलीवरी होगी इस टाइम लेग साइड पे, एंड 90 रन बन चुके हैं, और द पूल इज वेल सेट। और अगर मैं ये कहूं कि जो इस पूल की ये पोजीशन है कि न्यूजीलैंड की आज विक्ट्री के बाद थोड़ा सा
कह सकते हैं कि इस मैच के रिजल्ट के बाद क्लियर होता जा रहा है कि न्यूजीलैंड will be the one side who will be going into the semi-finals, and other could be Australia or England. Will have to see after a couple of games and couple of days. Rajitha just manages to put the bat on the ball, and whether I don't think Dasha will take. Yes, definitely he takes the run, and 91 at the end of 16 overs, and Dasun Shanaka on 35 and Rajitha on 4, or they are in they are just trying to play full quota of 20 overs and don't want to go ball out because it will not help the run rate. It will not help the cause, because run rate is very crucial in these pool games when there are 5 other teams playing for the final spots, and in out of 6 teams just 2 teams will be going into the next stage. Run rates always matters there. Run rate is very crucial, and New Zealand are really on the top after these 2 important points against Sri Lanka. They will be leading the chart handsomely. It could be very interesting if Sri Lanka beats them today, but unluckily they didn't able to do it. Wide delivery to start the over. Bolt is to bowl his last over, and he bowled his 3 over quota. He bowled 3 over out of his 4 overs quota in the first 6 overs, and now he is about to bowl his last over. Took 3 wickets. Let's see whether he takes 5 or not. Good delivery. Dot delivery. Hit. Rajitha hit it towards mid wicket. A dot one. It was the time when Sri Lankans were really dominating and had pushed it towards cover, and Williamson just misses it. Didn't hit the direct hit, otherwise it will be goner for Rajitha. Hit it straight into the hands of Williamson. It just runs toward other and try to give strike rate to Shanaka. Williamson just misses it very closely. Sri Lankans were upper hand in the first 6 overs of New Zealand innings, but just losing the plot and the game right word when Phillips were batting, and they dropped 2 important catches of Phillips, and after onwards, Phillips didn't even look back and scored a brilliant century and totally changes the scenario of the game. Good slow one, and didn't give room to Dasun Shanaka and dot delivery. He just manages to edges it toward, only managed to hit the inside edge of the bat and dot delivery. Good bowling from Trent Bolt, and just gave away 13 runs in a spell of 3.3 overs and took 3 wickets. All 4 feeders are on the leg side, one on the off side. Try to hit the lap shot, but misses it and hit his gloves, and Bolt takes the ball and a dot delivery once again. They yet has to score the 193 runs on 16.4 overs, the loss of 8 wickets. Trent Bolt bowling is fifth, really good Yorker outside off stump and a dot one. Brilliant over. जबरदस्त bowling कर रहे हैं
ट्रेंट बोल्ट, और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे कि अपने फ्रीली खेल पाए। और ब्रिलियंट स्पेल ट्रेंट बोल्ट का स्टार्ट किया, एक चौके से आगाज किया, उसके बाद उसी ओवर में 2 विकेट्स ली और कंप्लीट चेंज सिनेरियो किया। फिर उसके बाद अपने दूसरे ओवर में फिर से आया, श्रीलंका को डिसमिस किया और बिल्कुल न्यूजीलैंड के हाथ में गेम। बिग हिट एंड इट जस्ट गोज इनटू द हैंड्स ऑफ फिलिप्स, और अपने ओवर के आखिरी बॉल पे और अपने स्पेल की आखिरी बॉल पे एक विकेट ले लिया एंड शनाका गोज, एंड बहुत बड़ा विकेट है बिकॉज शनाका वाज ट्राइड टू गो बिग एंड जस्ट मिसेस इट आउट। चौथी विकेट फॉर ट्रेंट बोल्ट एंड आउटस्टैंडिंग स्पेल 4 फॉर 13। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट और सऊदी दोनों ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। तो आई हैव पिक्ड सऊदी फॉर टुडेज गेम, एंड व्हाइल बैटिंग मैंने कहा था कुसाल मेंडिस पे होली सोली डिपेंड करेगी या श्रीलंकन इफ दे हैव टू चेज दिस आउट। एंड कुसाल मेंडिस एक बाउंड्री हासिल करने के बाद, चौका लगाने के बाद कैच हुए ऑन द बॉल ऑफ बोल्ट। तो मेरे दोनों मेन बॉलर्स और बैटर जो हैं उन दोनों का रोल देख लें रहा, एंड इट वाज बोल्ट हु टुक द विकेट। और नाउ इस ओडी करेंगे डेफिनेटली। अब तो इस ओडी को ओवर करना होगा, या मे भी जरूरत तो नहीं है सऊदी को ओवर कराएं, एंड देन इफ दे नीडेड तो जिमी नेशम को ओवर दे सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं। एक विकेट ही लेना है, 9 विकेट्स गिर चुके हैं और पहले 6 ओवर के बाद यस इट्स इज बैक। वेरी पुअर डिलीवरी एंड वेरी वेरी शॉर्ट, एंड मैं ये सिर्फ कहूंगा कि वाइड डिलीवरी थी डाउन द लेग साइड, और अगर एक दो छक्के पड़ जाएं तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस टाइम पे एक दो छक्के बहुत क्रूशल हो सकते हैं, और जो विलियमसन चाह रहे थे वो नहीं हो पाएगा कि रन रेट का गैप ज्यादा हो। फुलर डिलीवरी की डॉट बॉल, एंड मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा हिट हो सकता है। सऊदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, ही विल डेफिनेटली टेक्स सेकंड विकेट। ये कदमों का इस्तेमाल किया एंड जस्ट मैनेज टू हिट टुवर्ड्स लॉन्ग ऑफ फॉर 1 रन। अच्छी बैटिंग कर रहा है राजिथा, और अपनी विकेट थ्रो नहीं की इवन व्हाइल बैटिंग विद हिज कैप्टन, और जरूरत नहीं थी क्योंकि बिग हिट से आपको विन तो मिल नहीं सकता। एटलीस्ट आपको पूरे ओवर अगर आप खेल लें तो इट विल बी योर सेकंड बेस्ट आफ्टर कंप्लीट फेलियर ऑफ योर। मैं कहूंगा कि ओपनर्स यही एक चीज है कि आप कंप्लीट ओवर खेल सकें अगर आप जीत नहीं रहे। डॉट बॉल हुई, बैक ऑफ लेंथ बॉल थी टू लेहुरू, और लेफ्ट हैंडेड बैटर है और सीधा इस सोडी के हाथ में बॉल गई और किसी रन का भी इजाफा नहीं होगा। इस सोडी चौथा बॉल करेंगे अपने तीसरे ओवर का, और लेहुरू हिट किया मिड विकेट की जानिब और मेरे ख्याल में 4 रन हासिल करेंगे। अच्छी शॉट और गैप तलाश किया और शॉर्ट बॉल कर रहे हैं इस सोडी। और जो एक कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक बॉलर का आना चाहिए, वो मुझे बिल्कुल मिस किया और रिलक्टेंट थे थोड़ा फ्लाइट देने में, इसी वजह से बाउंड्रीज कंसीड करते हैं। शॉर्ट बॉल तो बहुत आसान हो जाती है हिट करना, ही हैज टू बीट समवेयर इन हिज फ्लाइट। अगर बॉल की पिच में बैटर को बीट करना होगा। इस बार फुलर डिलीवरी थी, सीधा कवर्स के फील्डर के पास गई और डॉट डिलीवरी। दिस इज मोर लाइक इट, ऐसी बॉल करनी होगी आपको। और अभी तक सैम करन जो है वाइड उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं, अदरवाइज 4 बॉलर्स ने 4 लिए हैं। दिस वन अगेन फुलर एंड बीट्स द बैट एंड हिट द थाई पैड एंड फिनिशेस द ओवर। और डॉट बॉल होगी वंस अगेन। 18 ओवर कंप्लीट, इट्स 99 रन्स फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स, एंड सऊदी करेंगे अब अपना लास्ट ओवर और विल सी के क्या सऊदी ले पाते हैं विकेट। तस्कीन, वसीम, बोल्ट एंड एनरिच नोच ने 4 विकेट्स लिए हैं, एंड सैम करन हैव टेकन 5 विकेट्स इन दिस वर्ल्ड कप। और
It was against Afghanistan. लूजिंग अ मैच अगेंस्ट आयरलैंड इंग्लैंड के लिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी टफ हो गई है बिकॉज England has to win their main games against New Zealand, the bigger game, which will be coming very shortly in few days, or will be very tough for English side. Saudi bowling to Rajitha, slow one, just hit it straight to the short mid wicket fielder. Slow one था, read नहीं किया था and just hit it straight towards mid wicket dot ball. And they played 15 deliveries for 6 runs. He didn't even try to go big. Uh, Saved his wicket, though it was he didn't even he didn't even try to go big. Again, dot delivery, just hit it straight to the cover fielder, another dot, and it definitely दासुन शनाका ने इनको बोला होगा कि विकेट थ्रो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे somehow try to squeeze the margin of their defeat to keep the run rate well, but I don't think it worked. Even Dasun tried to score a few runs, but still 70 runs needed. 69 more runs needed. Again, another dot delivery Yorker, and it's a good Yorker. Hit it straight to the bowler and dot delivery. New Zealand just takes the game away from Sri Lankans, and earlier when Sri Lankans were bowling, they were very good in the first 6 overs. Then in the last 14 overs, they gave too many runs, and multiple times they dropped catches and misfielded, and it just cost them the game. And I told you earlier that it is in the it is expected that if you keep on wasting, if you keep on dropping catches, it will not help the cause and it will in the end damage you somewhere around. And 4 dot deliveries, and the fifth one is a wide delivery, and 100 completes for New Zealand, for Sri Lanka finally in 18.4 overs. So they trying to takes the review for this one. He thinks that it just hit the thigh or something. In 4 deliveries, just one wide and other 4 were dots. Fifth delivery of his last over, and another good delivery. Dot one tried to hit it, but hit it straight to the into the hands of Bolt. Didn't time well and just edged it. बहुत अच्छी कैप्टनसी, बहुत अच्छी बॉलिंग, डिसिप्लिन्ड बॉलिंग एंड फील्डिंग देखने को मिली आपको, और कंप्लीट आउटक्लास किया। इन श्रीलंका अपनी इनिंग्स के आगाज से ही बहुत प्रेशर में था, एंड मौका ही नहीं था इनके पास, क्योंकि इनके देखिए आप बैटर्स आउट हो चुके हैं और एटलीस्ट 3 से 4 ओवर ऐसे हैं जो कि इनके बॉलर्स ने खेले हैं, क्योंकि बैटर्स आउट हो गए थे। फाइनली 1 रन बना इस ओवर में बैट से, और ही हिट इट टुवर्ड्स mid on and takes run, or at the end of 19 over it's 101 for the loss of 9 wickets। और इस सोडी करेंगे अपने आखिरी ओवर को, और विल सी कि कितना स्कोर ओवर कर पाती है श्रीलंका की टीम। और न्यूजीलैंड के आज अर्ली बैटर्स जो हैं वो विकेट आउट हो, विकेट खोई उन्होंने, और एक अच्छा मौका था श्रीलंका के लिए कि मैच में अच्छी पोजीशन बरकरार रखते, बट एक मौका गंवाया आज इन्होंने मेरे ख्याल में। सोडी बॉल करेंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप और सीधा बैकवर्ड पॉइंट पे, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर प्लेस है उनके पास, बॉल गई, 1 रन का इजाफा होगा। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर हो सकता था ये
श्रीलंका की तरफ से, अगर ये टोटल 120-30 पे ही रोक दिया जाता, जो कि पॉसिबिलिटी थी डेफिनेटली, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि पहले 6 ओवर्स में 25 रन और जस्ट और 3 विकेट्स का गिर जाना, और उसके बाद मिचेल और फिलिप्स की बैट पे बॉल नहीं, और दिस इज आउट एंड स्टंप्स, और 10 विकेट्स बॉल आउट कर दिया श्रीलंका को, और लेहुरू भी आउट हुए, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, और विनिंग बाय अ फेयर मार्जिन ऑफ 65 रन, और मेरे ख्याल में ये 3 मजीद प्लस रन रेट या 4-2 मजीद प्लस रन रेट, इट्स अ नो बॉल चेक, और देख रहे हैं इवन दो के प्लेयर्स आपस में हैंडशेक्स करते, बट अंपायर हैज बीन चेकिंग फॉर अ नो बॉल, और फाइनली इट्स ओके एंड अंपायर हैज गिवन इट आउट, और इस जोड़ी इन दी एंड 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर न्यूजीलैंड आफ्टर स्टार्ट जो इतना अच्छा नहीं था, दे मेक वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक, एंड माय मैन फॉर टुडेज मैन मैं डेफिनेटली फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स, और ग्लेन फिलिप्स अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहे थे, 100 के स्ट्राइक रेट से जा रहे थे आफ्टर प्लेइंग 25-24 डिलीवरीज, देन व्हाट अ कमबैक, बिकॉज कपल ऑफ चांसेस जो थे वो श्रीलंकन फील्डर्स ने दिए, एंड ही टुक एडवांटेज ऑफ दोज मोमेंट्स एंड मेक अ वेलिएंट 100 आउट ऑफ 167, 104 रन जो थे वो ग्लेन फिलिप्स के थे, और इट वाज अ ब्रिलियंट शो पुट ऑन बाय ग्लेन फिलिप्स, और कंप्लीट आउट क्लास किया 11 के 11 प्लेयर्स को मेरे ख्याल में उस टाइम पे। ही वाज अगेंस्ट 11 ऑफ दो श्रीलंका व्हिच वर फील्डिंग एंड बॉलिंग, और कैप्टनसी वंस अगेन फॉल्टर की, थिक्शाना के ओवर्स को स्पेयर किया और एंड तक रखा, और इन दी एंड वो कंसीड किया और कॉस्ट किया मैच। मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उनको टाइमली ओवर दिए जाते और वो चौथी पांचवी विकेट ली जाती, बिकॉज दे आर नॉट नोन टू स्कोर रन्स थ्रू देयर मिडल ऑर्डर, बट टुडे फिलिप्स ने वन साइडेड बैटिंग करते हुए तबाही की श्रीलंकन के लिए, और मैच का इख्तिताम न्यूजीलैंड 65, और मैं एक चीज आपको बताता जाऊं कि न्यूजीलैंड लीड कर रहा है, और कन्विंसिंगली पूल को लीड कर रहा है। अगर मैं टेबल की पोजीशन बताऊं तो आफ्टर 3 गेम्स न्यूजीलैंड की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और चार्ट को लीड कर रहे हैं न्यूजीलैंड, एंड टॉप पे है न्यूजीलैंड, और अभी अपडेट होगा देन वी विल टेल यू कि मेरे ख्याल में फिर भी 6.5 से प्लस रन रेट होगा, और 3 मैचेस के इख्तिताम पर 5 पॉइंट्स, और इंग्लैंड 3 मैचेस के इख्तिताम पर 3 पॉइंट्स पे बरजमान है, एंड अभी इनके मैच जो न्यूजीलैंड के रहते हैं वो इंग्लैंड से हैं और आयरलैंड से हैं। दीज 2 गेम्स लेफ्ट फॉर न्यूजीलैंड, और पहली और 4 नवंबर को मैचेस होंगे। पाकिस्तान के मैचेस हैं कल, और ऑल इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। आप लोगों ने प्रेशर नहीं लेना एंड डोंट पैनिक, और आई विश गुड लक टू पाकिस्तानी टीम आफ्टर वेरी पुअर शो in the last game against Zimbabwe, but still they have a chance. They have to fight back and had to win all 3 games at least। अपने पार्ट पे जो बेस्ट बनता है वो इनको करना होगा, and to had to win big, had to defeat South Africans, but I don't think पाकिस्तान इतना वेल सेट है कि साउथ अफ्रीका को बीट कर सके, बिकॉज साउथ अफ्रीकन्स आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। सो विल बी बैक विद आवर स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम इन द कमिंग डेज, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सईद अली के संग, और float in your comments and your reviews on our live streaming, and keep in touch with us. Thank you, bye bye for the next game. Take care, Allah Hafiz.